Hey guys, welcome to my channel. In this video, I am going to tell you how to apply for TCS NQT, which is going to held in August and November 2021. So in my previous video, I have already told you how to create account on TCS Ion Hub. This is the logged in page. So let's scroll down and let's get started. Okay, cognitive assessment, which is a prerequisite, as I earlier told in my previous to previous video. By now, okay. Personal detail, you have to enter here name, email id, state, city, date of birth, gender, 10th roll number, and phone number, educational qualification, like your college name, your branch specialization, graduation month, etc., etc. Examination detail, like two options are there for August and November. You can choose anyone. Online, remotely proctored, in center, in offline mode. Not offline means not from home, you have to go there. Exam both will be online. And then I declare I have system requirement. System requirement mean there are few requirements in TCS. I'll tell you in my upcoming videos, like IBA launcher. I guess it is downloaded. Yeah, through which a key is generated, and you have to copy that key and then log in on a specific URL. Then paste that key. Then they will check all your microphone and camera. So it's a very easy process. I'll explain you in my upcoming videos. That's not a matter. And online exam remote proctor assessment always allows you to appear for test from your home or any location. Remote proctor means that your exam will be monitored by an invigilator remotely. You need to ensure the following system requirements are met. Windows, either Windows, Ubuntu or OS. मैक ऑपरेटिंग नहीं चलता यार, बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बार मैंने दिया था, तो मैक से मत ट्राई करना, या तो Ubuntu हो या विंडोज हो। गूगल क्रोम हो तो अच्छा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 2 to 5 MPS जियो में आ जाती है यार, इतनी तो आजकल। और वर्किंग वेबकैम होना चाहिए, अच्छे से क्लीन कर देना उसको, और घर से ही देना मैं सजेस्ट करूँगा। कोविड का टाइम भी चल रहा है, और भी एक दो वजह हैं जो यहाँ खुल के नहीं बता सकता, टीसीएस का एम्प्लॉय हूँ तो। वैसे कोविड ही है मेन वजह, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं हो पाती बाहर, तो रिमोटली दें घर पे बैठ के, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करना है, फिर सबमिट करना है, फिर वो पैसों के लिए मांगेगा। जैसे पैसे देने हैं, इधर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो दे के और आप अपना अप्लाई कर दीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो कमेंट डाउन कीजिए, और या फिर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होइए लिंक्डइन पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।